Good morning everyone. I hope you all are safe at your home. In the previous lecture we had done our lesson growth and reproduction, reading and explanation of this chapter. Today we are going to start exercise. First of all, we are doing MCQ of worksheet 1 to 3 and back exercise. First MCQ, growth and reproduction in plants chapter name. The outer hard covering of the seed is called first cotyledon, embryo, seed coat, radicle. So the outer hard covering of the seed is called seed coat. Second MCQ, the structure which stores food for the baby plant is called embryo, plumule, seed coat, seed leaves. So it is called as seed leaves which store the food for the baby plant. Third MCQ, plants with light weight seeds are dispersed by. जो प्लांट्स का लाइट वेट होता है वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? एक्सप्लोजन, वाटर, विंड या एनिमल्स. इट इज़ डिस्पर्स्ड बाय विंड, हवा. नेक्स्ट, रोज कैन बी ग्रोन बाय. नाउ रूट कटिंग्स, अंडरग्राउंड स्टेम, लीव्स और स्टेम कटिंग्स. रोज कैन बी ग्रोन बाय स्टेम कटिंग्स. नेक्स्ट, प्लोइंग ऑफ फील्ड्स इज फॉलोड बाय इरिगेशन ऑफ द फील्ड, adding manure, harvesting the crops, sowing the seeds. So plowing of field is followed by sowing the seeds. Next, dash is a खरीफ crop. इनमें से कौन सी crop है जो खरीफ crop है? pea, mustard, beet या jute? It is jute. Wheat is an example of dash crop. Summer, winter, autumn or rainy. Wheat can be grown in winter, so it is an example of winter crop. Practice of growing crop on a large scale is called. When we grow crops on large scale, it is called as agriculture. Reproduction through spores occur in moulds या pea. Moulds reproduce through spores, so the answer is moulds. Coconut floats in the water with the help of fibers outer covering, spongy part. It floats with fibers outer covering. Next, a seed with 2 cotyledons is called dash seed, monocot or dicot. It is known as dicot. Di means 2, so there is 2 cotyledons. So we know that it is dicot. Correct answer is dicot. Next, fill-ups. First, filling the blank. Plants require dash with which they get from sunlight, dash which is prepared by moisture, and dash with for their germination. Plants require warmth. So plants require warmth which they get from sunlight. Warmth means garmi. Water which is provided by moisture, and air for their germination. Second, some seeds are eaten and thrown away by animals. Animals eat them and throw them away. So seeds are dispersed by animals also. These seeds grow into new plant. So when animals throw seeds here and there, they grow into a new plants. In some cases, seeds have hooks, stiff hair or spines which help in their dispersal. Next one, plowing is the practice of losing the soil using a plow before seeds are sown. It helps to increase air circulation in the soil.
सो प्लोइंग क्या है? प्रैक्टिस है लूजनिंग द सॉइल यूजिंग अ प्लो बिफोर सीड्स आर सोन। जब हम सीड्स उगाते हैं उससे पहले प्लोइंग होती है फील्ड की। फार्मर्स डू प्लोइंग फर्स्ट देन सो द सीड्स। इट हेल्प्स टू इंक्रीज एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल। नेक्स्ट, air, water and warmth are needed for germination. So for germination these all are needed. Fifth, P is dispersed by explosion. Sixth, Philip, seed coat has a tiny dash through which the seed gets water. सीड कोट के अंदर क्या होती है? एक टाइनी होल होती है थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर, जहाँ से वाटर अंदर जाता है। रेडिकल इज अनदर नेम फॉर डैश इमर्जिंग फ्रॉम अ सीड। रेडिकल किसका नेम है? अनदर नेम रूट का। और शूट का अनदर नेम है प्लूमल। डैश सीड्स हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर एंड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। साइकोमर सीड है एक, उसकी विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है विच आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, जिसके सीड्स डिस्पर्स होते हैं हवा के द्वारा। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड्स। प्लांट ग्रोन इन द फील्ड is called, plants grown in the field is called as crops, and the practice of growing crops on a large scale is called as agriculture. Small shoots emerging from a seed. When small shoots emerge from a seed it is called as plumule. पीसीज ऑफ स्टेम विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो पीसीज ऑफ स्टेम के न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सीडलिंग। ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड। बेबी प्लांट से जब ग्रोथ होती है किसी भी सीड की उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will do true false and question answers. I hope you all understand MCQ, fill-ups and one word. Do this all the work on science book work. Thank you. Have a nice day.